अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 20th लेक्चर है हमारा द रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जो है वो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करेंगे। Reproduction can be defined as the biological process of producing a new individual or an offspring identical to the parents. Reproduction से मुराद ये कि एक बायोलॉजिकल प्रोसीजर है, प्रोसेस है जिससे एक न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग भी बोला जाता है कि आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स के पेरेंट्स की तरह, बिल्कुल नहीं तरह। This process ensures the increase in the number of individuals of a species when conditions are favorable. It is one of the fundamental characteristics of living things and an essential life process. There are two types of reproduction, asexual और sexual. Types आपने याद रखनी है। Sexual reproduction में basically क्या हो रहा है? This process of reproduction is very complex. Complex process है sexual reproduction that involves the formation and transfer of gametes, जिसमें हमारे gametes की transformation हो रही होती है followed by fertilization, the formation of the zygote and embryogenesis. Sexual reproduction जो है एक complex procedure है, इसमें gametes की फॉर्मेशन हो रही है, जाइगोट बन रहा है और एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसीजर हो रहा है। तीन मेन आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में जो है हमारे पास दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट and the new offspring produced is genetically similar to the parent. Asexual reproduction है जो ह्यूमन बीइंग में हो रही है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स हम अब उनको डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। All human beings undergo a sexual mode of reproduction. In this process, two parents are involved in producing a new individual, male, female, opposite characteristics, opposite gender. Offspring are produced by the fusion of gametes, sex cells from each parent. Hence, the newly formed individual will be different from parents, different both genetically and physically. Human reproduction is an example of sexual reproduction. Human reproduction की जो common example है वो sexual reproduction है। In human beings, both males and females have different reproductive systems. Hence, they are not exhibit sexual dimorphism. Males have testes, उनको testicular procedure बोला जाता है, while the females have a pair of ovaries. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है एंडोक्राइन सिस्टम में टेस्टिस में कौन से हार्मोन्स अपना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और फीमेल में कौन से हैं, मेल में कौन से। जैसे फीमेल में हमने टेस्ट एस्ट्रोजन की बात की थी, प्रोजेस्टेरोन की बात की थी, मेल में हम लोगों ने टेस्टोस्टेरोन की बात की थी। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इन देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी, दोनों चीजों में आपने ये याद रखना है। अब हम पहले जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद जो है वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स that make up a man reproductive and urinary system. दो चीजें, these organs do the following jobs within your body. क्या फंक्शंस परफॉर्म हो रही हैं? सबसे पहला है दे प्रोड्यूस, मेंटेन एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म। प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं और ट्रांसफर भी कर रहे हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड सीमन द प्रोटेक्टिव फ्लूइड अराउंड द स्पर्म, सीमन उसको बोला जाता है। उसके बाद दे डिस्चार्ज स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दे प्रोड्यूस एंड सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन्स। The male reproductive system is made up of internal inside your body and external outside your body. Together, these organs help you urinate with your body of liquid waste materials, have sexual intercourse, and make children. ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रोसीजर बताया जा रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है किस तरह से वर्कआउट कर रहा है, हाउ डज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन। The entire male reproductive system is dependent on hormones. Hormones का, organs का, glands का बहुत important role है। Hormones हमने पहले भी बात की थी।
हमने एंडोक्राइन सिस्टम में, these are chemicals that stimulate or regulate the activity of your cells or organs. The primary hormones involved in the functioning of the male reproductive system, primary hormones जैसा कि follicle stimulating hormone FSH और LH एंड टेस्टोस्टेरोन, ये तीन जो है वो हार्मोन्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। पहला फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, उसके बाद LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। FSH एंड LH आर प्रोड्यूस्ड कहां से होगा? बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमने पढ़ा है, इट्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ योर ब्रेन and it's responsible for many functions in your body. FSH is necessary for sperm production. FSH जो है वो sperm production के लिए बहुत जरूरी है। अगर FSH हार्मोन का लेवल बॉडी में कम होगा या ना होने के बराबर होगा तो sperm की प्रोडक्शन नहीं होगी, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम दिया गया है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर LH हार्मोन की अमाउंट कम होगी तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा, which is necessary to continue the process of spermatogenesis. Testosterone is also important in the development of male characteristics, जैसा कि including muscle mass and strength, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, बोन मैस एंड सेक्स ड्राइव, इन सब में जो है टेस्टोस्टेरोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम व्हाट आर द एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे। एक्सटर्नल, मोस्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ योर एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विस। द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड द पीनस, स्क्रॉटम एंड द टेस्टिकल्स। पीनस की हम सबसे पहले बात करते हैं। द पीनस इज द मेल ऑर्गन फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। इट हैज 3 पार्ट्स, जैसा कि सबसे पहले रूट, दिस इज द पार्ट ऑफ penis that attach to the wall of your abdomen, abdomen की wall के साथ attach होता है इसकी root। The body or shaft shaped like a tube or cylinder. The body of the penis is made up of 3 internal chambers. Inside these chambers there are special sponge-like erectile tissue that contain thousands of large spaces that fill with blood when you are sexually aroused. As the penis filled with blood, it becomes rich and erect, बताया जा रहा है, which allows for penetration during sex. The skin of the penis is loose and elastic, allowing for changes in penis size during an erection. The glans, this is the cone-shaped end of the penis. The glans, which is also called the head of the penis, is covered with a loose layer of skin called foreskin के नाम से। This skin is sometimes removed in a procedure called प्रोसीजर के दौरान इसका सरकमसिंग का नाम दिया गया है। द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, द ट्यूब, एक ऐसी ट्यूब है दैट ट्रांसपोर्ट बोथ सीमन एंड यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, is located at the tip of the gland penis. This penis also contains many sensitive nerve endings. Semen which contains sperm, semen जो है वो sperm को contain कर रहा है, is expelled, ejected through the end of the penis when the man reaches sexual orgasm. When the penis is erect, the flow of urine is blocked from the urethra, allowing only semen to the eject organism. Scrotum की हम बात करेंगे। इसमें the scrotum is the loose pouch-like sac of skin that hangs behind the penis. It holds the testicles, also called testes, as well as many nerves and blood vessels. The scrotum protects your testes as well as providing a sort of climate control system. Basically, important role है for normal sperm development. The testes may be at a temperature slightly cooler than the body temperature. Special muscles in the wall of the scrotum allow it to contract, tighten and relax, moving the testicles closer to the body for warmth and protection or further away from the body to cool the temperature. Testicles, testes की बात कर लेते हैं। The testes are oval organs about the size of very large olives that lie in the scrotum, secured at either end by a structure called the spermatic cord. Most men have 2 testes. The testes are responsible for making testosterone. टेस्टीज जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन आर फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म। विद इन द टेस्टीज आर कोलाइड मैसेज ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड स्पिनोफर्स। ट्यूब्यूल्स का नाम है। दीज ट्यूब्यूल्स आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द स्पर्म सेल्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। एपिडिडिमस की हम बात करेंगे। The epididymis is the long colloid tube that rests on the back side of each testicle. ये back side की बात की जा रही है testes. It carries and
sperm cells that are created in the testes. It's also the job of the epididymis to bring the sperm to maturity. The sperm that emerge from the testes are immature and incapable of fertilization during sexual arousal. Characteristics force the sperm into the waste differences. What are the internal male reproductive system? हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम female reproductive system की बात करेंगे. You have several internal organs, also got accessory organs that play a big part in the male reproductive system. These organs include जैसा कि vas deferens. The vas deferens is a long muscular tube that travels from the epididymis into the pelvic cavity to just behind the bladder. Vas deferens transport mature sperm to the urethra in preparation for ejaculation. Ejaculatory ducts. These ducts are formed by the fusion of the vas deferens and the semen vessels. The ejaculatory ducts empty into the urethra. उसके बाद हम मजीद बात करेंगे और आगे चलेंगे यूरिथ्रा की. The urethra is the tube that carries urine from the bladder to outside of your body. In males, it has the additional function of expelling semen when you reach organism. When the penis is erect during sex, the flow of urine is blocked from the urethra, allowing semen to be ejectile at orgasm. एक natural procedure के दौरान. Seminal vessels क्या हैं? The seminal vessels are sac-like pouches that attach to the vas deferens near the base of the bladder. The seminal vessels make a sugar-rich fluid, fructose, जो natural sugar fruits में भी होती है, that provides sperm with a source of energy and helps with the sperm ability to move motility. The fluid of the seminal vessels make up most of the volume of your ejaculatory fluid or ejectile. Prostate gland बड़ा important organ है. The prostate gland is a walnut-sized structure that is located below the urinary bladder in front of the rectum. The prostate gland contributes additional fluid to the erectile. Prostate fluid also help to nourish the sperm. Prostate fluid जो है वो हमारी sperm को nourishment provide कर रहे होते हैं. The urethra which carries the erectile to be expelled during organism runs to the center of the prostate gland. तो अब हम मजीद बात करते हैं. उसके बाद हम देखते हैं एक और ग्लैंड की बात करते हैं. पॉपुलर ग्लैंड आर पी साइड structure located on the sides of the urethra just below the prostate gland. These glands produce a clear fluid that empties directly into the urethra. This fluid serves to lubricate the urethra and neutralize any acidity that may be present due to residual drops of urine in the urethra. अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे. उसमें जो है व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प वुमन और पीपल असाइंड female at birth, have sexual intercourse, reproduce, menstruate. What are the parts of the female reproductive system? में हम जैसे हमने मेल की बात की थी वैसे ही the female reproductive anatomy includes both external and internal parts. External parts में the function of your external genitals are to protect the internal parts from infection and allow sperm to enter your vagina. Your vulva is the collective name for all your external genitals. Are lost of people mistakenly use the term vagina to describe all female reproductive parts. However, your vagina is its own structure located inside your body. The main parts of your vulva or external genitals are labia majora. Main part की बात की जा रही है. Your labia majora, large lips, enclose and protect the outer external reproductive organs. During puberty, hair growth occurs on the skin of the labia majora, which also contains sweat and other and oil secretory glands. अब हम मजीद बात करते हैं labia minora की. Your labia minora small lips can have a variety of sizes and shapes. They lie just inside your labia majora are surround the opening to your vagina. The canal that joins the lower part of your uterus to the outside of your body, and urethra, the tube that carries pee from your bladder to the outside of your body. This skin is very delicate and can become easily irritated and swollen. Clitoris, your two labia minora meet at your clitoris, a small sensitive projection that comparable to a penis in men or people assigned male at birth. Your clitoris is covered by a fold of skin called the prepuce and is very sensitive to stimulation. Vaginal opening, your vaginal opening allows menstrual blood and babies to visit your body. Tampons, fingers, sexual or penises can go inside your vagina through your vaginal opening. Hymen. Your hymen is a piece of tissue covering or surrounding part of your vaginal opening. It's formed during development and present during birth.
उसके बाद ओपनिंग टू यूरिथ्रा, द ओपनिंग टू यूरिथ्रा इज द होल यूपी फ्रॉम इंटरनल पार्ट्स की अब हम बात करेंगे। वेजाइना जैसा कि इंटरनल पार्ट में आ रहा है, योर वेजाइना इज अ मस्कुलर कैनाल दैट joins the cervix, the lower part of uterus to the outside of your body. It can widen to accommodate a baby during delivery and then shrink back to hold something narrow like a tampon. It's lined with mucous membranes that help keep it moist मतलब रखने के लिए। Cervix, your cervix is the lowest part of your uterus. A hole in the middle allows sperm to enter and menstrual blood to exist. Your cervix opens, dilates to allow a baby to come out during a vaginal childbirth. Your cervix is what prevents things like tampons from getting lost inside your body. Uretus, your uretus is a hollow pear-shaped organ that holds a fetus during pregnancy के दौरान uretus ने ही जो है fetus को hold किया हुआ। Your uretus is divided into two parts में, the cervix and the corpus. Your corpus is the largest part of your uretus that expands during pregnancy. Ovaries are small oval-shaped glands that are located on either side of your uterus. Your ovaries produce eggs and hormones. Of course, ovaries के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। Fallopian tubes, these are narrow tubes that are attached to the upper part of your uterus and serve as pathways for your egg ovum to travel from your ovaries to your uterus. Fertilization of an egg by sperm normally occurs in the fallopian tubes. The fertilized egg then moves to the uterus where it implants into your uterine lining. What are the functions of the female reproductive system? The female reproductive system provides several functions in addition to allowing a person to have sexual intercourse. It also helps a person reproduce. Your ovaries produce eggs. These eggs are then transported to your fallopian tubes during ovulation, where fertilization by a sperm may occur. The fertilized egg then moves to your uterus, where the uterine lining has thickened in response to the normal hormones of your menstrual cycle, also called your reproductive cycle. Main एक ही बात है। Once in your uterus, the fertilized egg can implant into the thickened uterine lining and continue to develop. If implantation does not take place, implantation नहीं हो रही है, the uterine lining is shed as your menstrual period. In addition, the female reproductive system that maintain your menstrual cycle. उसके बाद है menopause की कंडीशन बताई जा रही है आपके सामने, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर में जो है वो दिखाया जा रहा है। ये हमारा जो था आज का 20th लेक्चर था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसका जो है आपने असाइनमेंट करनी है, ऐसा आपने करना है कि आपने असाइनमेंट में जो है इंटरनल पार्ट्स जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। बट आपने जो डाटा वो यहाँ से नहीं लेना, बुक से आपने रीड आउट कर लिया, देख लिया, वो डाटा जो है वो आपने आप कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ के ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो है ये लास्ट है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे थे, मेनोपॉज की हम बात कर रहे थे। ड्यूरिंग मेनोपॉज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम gradually stops making the female hormone necessary for the menstrual cycle to work. At this point, menstrual cycles can become irregular and eventually stop. You have considered to the menopause when you have gone an entire year without the menstrual period, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा आज का लेक्चर था। अब हमारा जो कल का लेक्चर होगा वो होगा स्केलेटन सिस्टम पे। स्केलेटन सिस्टम की जो है वो हम बात करेंगे, स्कल की स्पेशली, इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं उन सब की हम जो है वो बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम की, ठीक है। ओके ओके ओके, स्केलेटन सिस्टम।